we have most of the people here, I think. Okay, so we had to cut down a lot of talks because I know most people are more interested in hands-on, and some of these talks are going to be given to you in, or you can ask from Dr. Sajda, and she should be able to give them. I request Professor Ghiasun Nabi Tayyab to just come and tell us about subepithelial lesions because we don't have any cases of that. Thanks, Zat. So, just earlier today, one of the candidates was talking to what are the other indications of endoscopic ultrasound except for pancreatic lesions, except for lesions in the lymph nodes, or something that we see in the gallbladder or bile duct. So, one of the indications is subepithelial lesion, and this is something which is not all that uncommon. In almost day-to-day endoscopy, if you look at the upper GI tract carefully or lower GI tract carefully, you'll find some kind of subepithelial lesion in at least 10 to 15% of the total number of cases that you do. Now, if you look at the wall of the gut, you can see that we have got 4 layers starting from this side. बाज़ इसको 7 लेयर्स कहते हैं, बाज़ 4 लेयर्स कहते हैं. तो 7 की तरह मैं अपनी चीज़ों को सिंपल रखता हूँ कि मिकोज़ा है, then we got submucosa, then proper muscle, and then serosa. In between एक extra आप कह रहे कि muscularis mucosae जो है आप कह सकते हैं कि वो है. And how do they look like? This is how they look like. कि मिकोज़ा की मिकोज़ा और submucosa और serosa, ये 3 लेयर्स आपको ब्राइट नजर आएंगी. मस्कुलरिस मिकोसी और मस्कुलर लेयर ये आपको डार्क नजर आएंगी, हाइपोइकोइक नजर आएंगी. सो आफ्टर एवरी ब्राइट यू हैव गॉट अ डार्क लेयर. तो ब्राइट डार्क. तो अगर आप केयरफुली इनको, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्यूनिंग योर आईज एंड यू विल बी एबल टू मेक आउट दीज लेयर्स इन एनी गिवन पर्सन. व्हाट आई डू इज़ कि मैं जो स्क्रोल है उस पर एक पिक्चर खींच के तो अपने आईफोन से या जो भी मेरे पास फ़ोन हो उसका उसको एनहांस करके देख लेता हूँ कि अच्छा भाई एग्जैक्टली क्या लग क्या है. नाउ द होल आइडिया इज़ कि इफ़ आई फाइंड समथिंग सब एपिथेलियल, एक तो ना मिकोजल लेशन में मेलिग्नेंसी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है. दिस गोइंग टू बी ऑब्वियस ऑन योर एंडोस्कोपिक व्यू. बट इफ़ द प्रोट्यूबरेंस इज़ देयर but overlying mucosa is normal. From which layer this lesion is arising, हमें कुछ पता नहीं. For that, obviously, we need a gadget, a device which can look beyond the epithelium. तो उसमें इन layers के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि है कौन सा. तो उसमें आपका इंट्राम्यूरल को लीजन हो सकता है. दे कैन बी कंप्रेशन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इज़ द वे टू गो. अब जनरली वी आर यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी 7.5. अगर हमने नज़दीक के लीजन्स को देखना है तो एट टाइम्स इट्स बेटर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ऑल्दो इट्स गोइंग टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन, बट विद एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी से टू 12 तक हम जा सकते हैं ऑन द available EUS scans. तो हम 7.5 की जगह 10-12 पे जाके तो उसको ज़्यादा क्लोजली इनको असेस कर सकते हैं. तो जनरली किस लेयर में क्या ट्यूमर्स आते हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड. प्रोफेसर कीडा फ्रॉम किडसाडा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ही पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग and it is still one of the most prestigious paper on this subject. तो second layer muscularis mucosae, उसमें से लियोमायोमा या ग्रैनुलर सेल ट्यूमर बन सकता है. और जनरली जब इनकी प्रोजेक्शन आती है तो दिस इज प्रोजेक्टिंग इनसाइड टुवर्ड्स द ल्यूमेन. जो मस्कुलर लेयर है दैट इज गोइंग आउट, यानी अंदर की जो डार्क लेयर दिस इज गोइंग अवे, जो इधर की जो ब्राइट लेयर है दैट इज प्रोट्रूडिंग इनसाइड. सो दैट्स हाउ वी गेट टू नो दैट the lesion is arising from the second layer. Then from the third layer, carcinoid tumor, bradyneroma, lymphangioma, lipoma, fibroma, cyst, ectopic pancreas. और
फोर्थ लेयर में ग्लोमस ट्यूमर, जिस्ट, लियोमायोमा, शिवानोमा, ये हैं जनरली जो कि ट्यूमर्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोस थे। अब अगली बात है कि हाउ डू दे लुक लाइक? डू दे लुक लाइक ब्राइट? डू दे लुक लाइक हाइपोइकोइक, एनेकोइक? तो जो सिस्ट है वो आएगा एनेकोइक के तौर पे, यानी उसमें कोई शेडोज नजर नहीं आएगी। जिस तरह कल डॉक्टर खालिद बता रहे थे कि ये एनेकोइक एरिया, ये हाइपोइकोइक एरिया। सो एनेकोइक इज बेसिकली टू थिंग्स, सिस्ट और लिम्फेंजियोमा। जो हाइपोइकोइक हैं, जितने भी सेलुलर ट्यूमर्स हैं, दे विल ऑल बी हाइपोइकोइक except for one, and that is lipoma, which is going to look very bright. Lipoma is always very bright, एकदम से शाइन करता है। और हेमेंजियोमा भी बाज़ औक़ात उसी तरह नजर आता है कि शाइनी ब्राइट, इसलिए फरिया उसको फट से कह रही थी कि नहीं ये हेमेंजियोमा है। एक्टोपिक पैंक्रियास, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस उसकी नजर आ रही थी। एंड देन एट टाइम्स ग्लोमस ट्यूमर, फाइब्रोमा, that also gives the similar kind of picture. Ab gist can come from layer 2 and layer 4, mostly from layer 4. Gist can come from layer 2, layer 4, mostly from layer 4. Ectopic pancreas mostly from 2, rarely from 3 and 4. Lipoma generally from layer 3, carcinoid layer 2 or 3, cyst generally from layer 3. तो ये इसका स्टैंडर्ड है। और इसके आगे उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, हाइपोइकोइक, हाइपरइकोइक या माइल्ड हाइपोइकोइक विथ होमोजेनस जैसे कार्सिनोइड है, और सिस्ट एनेकोइक। इसमें जिस्ट इज समथिंग जब देखें तो उसको इमीडिएटली पिक करते कि यार दिस अपीयर्स टू बी जिस्ट। जिसका क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे? फ्रॉम लियोमायोमा एंड नंबर 2 शिवानोमा। तो ये तीन लेशंस हैं जो कि हाइपोइकोइक हैं, और उनकी जो अपीयरेंस है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पे मिलती जुलती है। बट आउट ऑफ दीज थ्री विच इज़ द कॉमनेस्ट वन? इट इज़ जिस्ट। ऑल्दो लियोमायोमा कैन ऑल्सो, लियोमायोमा इज़ नॉट ऑल दैट अनकॉमन। जिसकी ये कि जो आउटर जो बाउंड्री है थोड़ा सा बिजार सी होगी, थोड़ा सा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसकी कोई चोंचें वोंचें निकली होंगी। लियोमायोमा जब ग्रो करता है तो लियोमायोमा grows with a very good, well encapsulated lesion. So that's how you can differentiate between leiomyoma and the GIST tumor. Schwannoma, much more uncommon. खालिद साहब उसको शायद पहचान लेते हों, मैं तो अभी तक उसको नहीं पहचान पाता कि schwannoma को किस तरह उसको differentiate करना from the leiomyoma and the GIST tumor. तो EUS जब भी हम देख रहे थे उसमें और भी कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं। इन एडिशन टू द लेयर ऑफ ओरिजिन, ऑब्वियसली कि साइज़ क्या है। जब साइज़ 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ कर जाए तो बहुत ज़्यादा आप लेयर्स को डिफ्रेंशिएट करने में कामयाब नहीं होते, बल्कि जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना आपके लेयर्स की डिफ्रेंशिएशन मुश्किल होती जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ इट बिकम्स इररेलेवेंट एज वेल। नंबर 3 इको टेक्सचर, जो पहले कि एनेकोइक, हाइपरइकोइक, हाइपोइकोइक, और इनमें से होमोजेनस कौन सा है, नॉन होमोजेनस कौन सा है। उसके बाद बॉर्डर्स क्या हैं, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, इल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं। इल डिफाइंड बॉर्डर्स है तो उसका मतलब है कि समथिंग विच इज़ अ टेंडेंसी टू गो इन टू malignant side. So with poorly defined borders, उसके चांसेस। इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर इंटरनल नेक्रोसिस है तो उसका मतलब है कि कोई ऐसा लेशन है जिसकी वॉस्कुलरिटी है, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज द वॉस्कुलरिटी इज नॉट मैचिंग विद द टिश्यू वायबिलिटी, एज अ रिजल्ट द सेंटर इज गेटिंग नेक्रोस्ड। या कोई अंदर ऐसी डुप्लीकेशन सिस्ट है, एक और इस तरह की कोई पैथोलॉजी कि जिसमें cells have started to secrete something. So in addition to the solid component, you have started to have cystic component as well. The solid cystic component is combination में. Then vascularity. There are certain tumors which are very vascular. GIST is very vascular. Leiomyoma is not all that vascular. Schwannoma borderline दरमियान में आ जाता है. And then lymphadenopathy के साथ associated lymph nodes हैं कि नहीं, और अगर हैं lymph nodes तो किस तरह के lymph nodes हैं? Are they benign looking lymph nodes or they are rounded lymph nodes which are bigger than 1 centimeter with peripheral
enhancement and no blood vessels going towards the center. तो ये चंद एक चीज़ें जो कि देखने वाले, तो ये 7 parameters जो कि देखने वाले. Now coming down to the things one by one. जिसका क्या होता है, ये जिसकी जो है स्टैंडर्ड पिक्चर है कि एक अम्बिलिकेटेड है. मोस्टली किस तरह प्रेजेंट करते हैं, जस्ट रूटीन GI में, generally with GI bleed, but when they're small, one can pick them on routine endoscopy, and routine endoscopy being done for any other reason. So ये दो presentation. तीसरा कभी कभी radiologist हमारी तरफ भिजवाते हैं कि there's something there in the stomach, so you better do the endoscopy. तो ये 3 presentations हैं. How do they look like on endoscopic ultrasound? तो this is the general picture जो कि endoscopic ultrasound पे इनकी आती. तो variable echogenicity, contour and size, once they cross 5 centimeter in this size, the chances of malignancy they get higher. लेकिन diagnosis की basis क्या है? Diagnosis की basis biopsy है. अब biopsy कैसे, सब epithelial lesion की biopsy कैसी होगी? एक तो है कि ऊपर से mucosa हम काटें, mucosa काट के तो फिर directly biopsy लें. But this is possible when the tumor is already ulcerated and it is bulging inside the lumen. Otherwise, the best bet is to push a needle within the center of that lesion and take out the biopsy. FNB कर लें, FNA कर लें, generally with a size bigger than 3 centimeter. FNAC, FNB, they are working equally fine. They present with bleeding, abdominal mass and abdominal pain. Or 10 to 30% of the patients who are suffering from GIST, they are suffering from malignant GIST and not the benign GIST. इस पे हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या नजर आते हैं? टिपिकल स्पिंडल सेल्स. आज भी एक केस में स्पिंडल सेल्स जो आई थिंक खालिद साहब कर रहे थे, या एक केस में स्पिंडल सेल्स थे, क्योंकि मैं उसमें हिस्टोपैथोलॉजी पे देख रहा था किसी एक में, ये शायद कल था स्पिंडल सेल्स का. तो मेलिग्नेंट जिसके क्या फीचर्स हैं, मतलब कि देखने से EUS को पे देखते साथ ही आप कहते हैं कि नहीं, दिस लुक्स लाइक टू बी मेलिग्नेंट. नंबर 1, इट इज़ गोइंग टू बी लार्ज. Number 2, the borders are going to be ill-defined. Number 3, the ego pattern is going to be variable. तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि most likely this is a malignant GIST and this is not a benign GIST. और ये इसके cells हैं जो कि आपको एक दफ़ा आप देख लें तो कभी आप भूलते नहीं. Every time you are going to see them, differential diagnosis between again 3 things: schwannoma, leiomyoma and GIST. उसके बाद वो फर्दर उसका कर जो उनके मार्कर स्टडीज़ उस पर किया जाता है. एक्टोपिक पैंक्रियास, यूजली एक्टोपिक पैंक्रियास राइजेस फ्रॉम लेयर 2, कभी कभी लेयर 3, लेयर 4 से भी. किस तरह का होता है? एग्जैक्टली सेम हाइपोएकोइक सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, बट द डिफरेंस इज दैट इट इज़ राइजिंग फ्रॉम विद इन दी वॉल्स ऑफ दिस फिगर्स. मोस्टली दे आर 1 to 2 millimeter lesions. कभी कभी दे आर लार्ज and they can give us a diagnostic challenge, but most of the time one can see them and ignore them without even going further. Although having said that, number of times the granular cell tumor and other similar tumors have been found, carcinoid have been found in these people. तो endoscopy पे central umbilicus होता है इस तरह का. I'm sure you must have seen many of these lesions and you recognize them very well. देखिए आप कह देते हैं कि this is ectopic pancreas, no need to proceed further. तो इसकी आगे वैसे तो काफ़ी डिटेल्स हैं कि उसमें, लेकिन there is no point in going into the details like this. और किस तरह ये नज़र आते हैं उस पर endoscopy पे, इस पे EUS पे. तो वही जो pancreas की इतनी दफ़ा आपने इमेज देख ली है पिछले 2 दिन में कि I'm sure you will not be able to forget that. Lipoma, something which if you have seen lipoma once, you'll never miss it, and you can easily tell on the endoscopic ultrasound that this is lipoma. Hyperechoic homogeneous lesion with regular border, and that's how it looks. एक दफ़ा आपने इसको देख लिया तो कभी आप इसको मिस नहीं करेंगे. और इसकी इतनी clear cut picture होती है, and similar kind of pictures there
in the pancreas, this similar kind of picture is there if the lipoma is present at any other place too. तो अगर यहाँ पे हम देखें कि अब लेयर्स को कैसे ट्रेस करना है, दिस इज अ मैग्नीफाइड इमेज. तो आप स्टार्ट पे देखिए कि पहली हाइपरइकोइक मिकोजा, नंबर 2 हाइपोइकोइक मस्कुलस मिकोजा, नंबर 3 हाइपरइकोइक सबमिकोजा, और उसके बाद ये ट्यूमर है एंड द मस्कुलर लेयर इज गोइंग अराउंड दिस लीशन एंड देन यू हैव गॉट द सेरोसल लेयर. ठीक है. लियोमायोमा नेक्स्ट relatively common thing. किस तरह नजर आएगा? Well encapsulated rounded hypoechoic lesion. डिपेंड करता है किस लेयर से उठ रहा है, मस्कुलर मिकोजा से उठ रहा है या मस्कुलर लेयर से उठ रहा है, मीनिंग बाय लेयर 2 and 4. ये दो लेयर्स हैं जहाँ से आमतौर पर लियोमायोमा उठता है. शवनोमा किस तरह पता चलता है? हैज़ अ low malignant potential, but then it's of importance क्योंकि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. एंड अनदर थिंग, अगर आपके पास एलास्ट्रोग्राफी की फैसिलिटी तो उसमें मोस्टली ब्लू इज़ बैड, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फाइब्रोटिक ट्यूमर्स, सो जनरली इट गिव्स अ ब्लू पिक्चर. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर ये लाइट हम बंद कर सकें तो दिस इज़ गोइंग टू कम आउट लिटिल बेटर. Still not good. But this is a hypoechoic rounded lesion. और जब आप FNAC करते हैं तो ये उसकी पिक्चर होती है, उसके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे ये आपकी पिक्चर आएगी. नहीं, कोई इतना मज़े का नहीं आ रहा. तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, दैट्स हाउ दे लुक. जनरली ये उसकी एंडोस्कोपिक पिक्चर होती है. किस लेयर से उठ रहे हैं कोई बताएगा? ये एक आपकी ये मिकोजल लेयर आ गई, उसके बाद एक डार्क लेयर है, एंड देन इट इज़ मिक्स एक्सोजेनिसिटी लेशन ओवर हेयर. तो कौन सी लेयर बनी? लेयर 3. तो रिलेटिवली ब्राइट बट देन वेल एनकैप्सुलेटेड लेशन, मोस्टली न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर. गैस्ट्रोनोमा अब थोड़ा सा ये रिलेटिवली अनकॉमन है. पिक्चर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ectopic pancreas, लेकिन that's how they look, and this look is also not too different from ectopic pancreas, except कि इसमें उतनी fine salt and pepper appearance नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा सा coarse white fibers आते हैं, जिसकी वजह से one is able to differentiate कि नहीं यार ये typical classical ectopic pancreas नहीं है. Glomus tumor is next. That's how it looks. मोस्टली इसको बायोप्सी आप वैसे भी करने की कोशिश कर सकते हैं, बट देन द वे टू गो इज ऑब्वियसली फाइनल एस्पिरेशन, और डायग्नोसिस इज नॉट ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी, रादर इट इज़ ऑन द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री. लिम्फेंजियोमा वेरी वेरी रेयर बिनाइन ट्यूमर. किस तरह पता चलता है? दैट्स हाउ इट अपीयर्स. हेमाटोमास हर तरह के उसमें आपको रिफ्लेक्शंस मिल रही होती हैं, and that's how it appears. Granular cell tumor, this is how it looks. Sorry, फिर वही बात है कि इसमें वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन on this screen it is looking good. और diagnosis again on immunohistochemistry, not simple histopathology. So I thank you for your patient listening. Any question? You're more than welcome. Completely flips. If you see that in the stomach, 90%